हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल हब। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईएसआईसी एंड नॉसेट एम्स नॉसेट 2021। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से हार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये सारे एमसीक्यू मैंने प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। सो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए। लेट्स गो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एमसीक्यू। एमसीक्यू फर्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस: ग्रेट सिफेलियस, पॉपिटियल, इलियक, फिमोरल। आंसर है ग्रेट सिफेलियस। सेकंड, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शंस: aorta, carotid artery, subclavicle artery, pulmonary artery. Answer is aorta. Third, which valve prevent backward flow of blood into the left atrium? Options: aortic valve, pulmonary valve, tricuspid valve, mitral valve. Answer is mitral valve. Fourth, pacemaker of heart is? Options: AV node, SA node, Purkinje fiber, parasympathetic system. Answer is SA node. Fifth, heart sound are result of? Options: movement of blood into the heart from the aorta, blood flow through the heart, closure of heart valves, contraction of cardiac muscle. Answer is closure of heart valves. Sixth, stimulation of vagus nerve result in? Options: increase in heart rate, decrease in heart rate, dilatation of bronchioles, dilatation of coronary artery. Answer is decrease in heart rate. Seventh, which one of the following is non-modifiable risk factor of atherosclerosis? Options: cigarette smoking, hyperlipidemia, female over 55 year of age, sedentary lifestyle. Answer is female over 55 year of. 8. Lack of oxygen in the blood stream is? Options: apnea, cyanosis, anoxia, anoxemia. Answer is anoxia. 9th, the lack of oxygen supply to myocardium of heart lead to? Options: fibrillation, heart failure, angina, infarction. Answer is infarction. 10th, fever with relative bradycardia is seen in? Options: malaria, typhoid, filaria, diphtheria. Answer is typhoid. 11th, the P wave on the electrocardiogram corresponds to? Options: arterial depolarization, arterial repolarization, ventricular depolarization, ventricular repolarization. Answer is arterial depolarization. 12. Which of the ECG finding indicates hypokalemia? Options: tented T wave, ST segment depression, widening of QRS complex, prolonged PR interval. Answer is ST segment depression. 13. T wave inversion on the ECG are seen in following condition except? Options: hyperkalemia, myocardial infarction, myocarditis, subarachnoid hemorrhage. Answer is hyperkalemia. 14. Normal PR interval in ECG is? Options: 0.20 to 0.35 second, 0.30 to 0.45 second, 0.35 to 0.40 second, 0.12 to 0.20 second.
Answer is 0.1 to 0.20 second. 15. Normal CVP is options 5 to 10 centimeter H2O, 10 to 15 centimeter H2O, 15 to 20 centimeter H2O, 20 to 30 centimeter H2O. Answer is 5 to 10 centimeter H2O. 16. The diagnostic study to assess left ventricular dysfunction is options angiogram, catheterization, ECG, echocardiography. Answer is angiogram. 17. The enzyme level which is found elevated after myocardial infarction is options serum creatine, alkaline phosphate, phosphokinase, creatine kinase. Answer is creatine kinase. 18. Immediate treatment of choice for ventricular fibrillation is options administer adrenaline 0.1 mg per kg, defibrillate with 360 joule, cardioversion, administer antiarrhythmic drug. Answer is defibrillate with 360 joule. 19. AED stand for options arrhythmia eliminating device, advanced emergency defibrillator, authorized emergency defibrillator, automated external defibrillator. Answer is automated external defibrillator. 20. Which one of the following is the recommended order of resuscitation? Options ABC, CAB, CBA, BCA. Answer is CAB. Thank you friends for watching my video. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो, कोई भी आपको डाउट्स है तो. थैंक यू फ्रेंड्स.